where you will make the calculation. अब ये इसका क्यों इस तरह compulsion है? Because the only the hand written work will be accepted, only the manual work will be accepted. You have to do the calculations, graphs, comments manually, preferably with the lead pencil. So during the class you must have the printout of the manual, the design that we will be discussing, and you should have the lead pencil with you and the other accessories to which are required with it, so that you can note the data given to you, and you can complete the calculations and make the graphs, comment on the results, etc. ठीक है, तो सिर्फ मैनुअली ही काम करना है, हाथ से ही काम करना है, और वही एक्सेप्ट होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या होम कैंपस हो. तो इसलिए चाहे आप मैनुअल लें या आप जो सॉफ्ट कॉपी जो आपको शेयर की जाए उसका प्रिंट लें, दोनों सूरतों में आपके पास हार्ड फॉर्म में मौजूद होना चाहिए, ताकि आप क्लास के दौरान ही उसको जितना हो सके कंप्लीट कर सकें, और उसको एंड पे चेक किया जाएगा. इस तरह नेक्स्ट टर्न जो होगी उसमें आप कंप्लीट करके उसको चेक करवाएंगे. सो दिस इज़ द वे, दिस वुड बी द वे आउट to complete these design jobs. So is it clear to everybody? Some question is still there. क्योंकि सबको समझ आ गई है कि इस पे इस Yes, sir. डिज़ाइन को कैसे करना है. तो मैनुअली ही करना है, लेड पेंसिल से बेहतर है. तो जहाँ जहाँ टेबल्स दिए गए हैं वो मैं आपको शेयर किया है, जिसने प्रिंट लिए हैं वो देख सकता है, वहाँ वो डाटा फिल करेंगे. डाटा विल बी अवेलेबल इन द स्लाइड्स. ठीक है, तो ये स्लाइड्स भी आपको मैं शेयर कर दूँगा. वैसे ये स्लाइड उसी मैनुअल से बनी हुई हैं, तो बाकी चीज़ें वही हैं, सिर्फ डाटा इसमें एक्स्ट्रा है. तो वो डाटा जो है आप वहीं से ले लेंगे और वो आपको उसी को यूज़ करते हुए आप अपना काम कंप्लीट करेंगे. Okay, so let me continue with the design number 1. So first of all, should understand the statement. The statement is to plot a graph for the given data of temperature and saturated vapor pressure. Temperature represented by capital T and saturated vapor pressure by E sub S of air, showing that saturated vapor pressure is a function of the temperature. तो एक चीज़ तो आपने ये करनी, ग्राफ बनाएंगे और वो ग्राफ शो करेगा कि then that you will make a graph between saturated vapor pressure and temperature, and that graph will show that ES is a function of T, temperature. And once you make the graph and using these given conditions, there will be 4 conditions given to you. Each condition contains air temperature and versus corresponding vapor pressure, actual vapor pressure of the air. So using these 4 conditions and plotting these conditions on the graph, you will be finding saturation deficit, relative humidity and dew point temperature. तो आपने इसमें ग्राफ बनाना है ES और T के दरमियान, और फिर इन कंडीशंस को यूज़ करते हुए आपने ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है. सो दिस इज़ द डिज़ाइन एक्सरसाइज नंबर 1. Before I move to the data and the calculations, let me start with the discussion on related theory. So part of this are actually some repetition you will have in your theory class, first theory class with Dr. Noor Saab also. I think it's tomorrow. So over here we can have just brief introduction to certain terms which are important for you to learn as a part of this design, or at the start of the subject as a part of the introduction as well. So firstly is the hydrology. As you know, the name of the subject is hydrology and water resources management. Previously its name used to be engineering hydrology. So it was changed only in the previous year
Before that, as I mentioned, its name was engineering hydrology. Anyhow, so hydrology is a scientific study of hydrological cycle, which is also called as water cycle. So I think already in your previous classes you have learned. I think in FSC also you have this understanding of the water cycle or hydrological cycle. क्यों भी किसी को idea है क्या होता है ये water cycle जो है? कि कहीं ना कहीं पढ़ते तो हैं पहले. Yes, anybody who can explain what is water cycle? Hydrological cycle and water cycle is same thing. सर इसमें पहले जो पानी यहाँ से इवेपोरेट होके बादलों की तरफ जाता है, वहां से फिर बारिश होती है, वो नीचे जमीन में जाता है और जमीन से दोबारा पानी में, फिर दोबारा एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो ये साइकिल जो है चलता रहता है कि वाटर क्या है, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन के थ्रू अर्थ सरफेस पे आता है, वहाँ से कुछ पानी जो है वो इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, सीपेज हो जाती है उसकी, और कुछ पानी जो है वो नीचे और चला जाता है, कुछ पानी सरफेस पे फ्लो करते हुए रिवर तक पहुँच जाता है. इसी तरह जो नीचे पानी जाता है उनमें से उससे भी कुछ हिस्सा फ्लो करके किसी वाटर बॉडी तक पहुंच जाता है, वहाँ से फिर बड़ी वाटर बॉडीज़ पे, ओशियन पे, सीज पे चला जाता है, वहाँ से वेपोरेशन होकर दोबारा एटमॉस्फेयर में, क्लाउड फॉर्मेशन में, और फिर दोबारा प्रेसिपिटेशन. तो ये साइकिल क्या है, चलता रहता है. एंड इट हैज़ नो स्टार्ट एंड नो एंड. आप कहीं से भी शुरू करें, आप वेपोरेशन से शुरू कर लें तो दोबारा वेपोरेशन पे जाके फिर वो आ जाएगा. इसी तरह आप प्रेसिपिटेशन भी शुरू कर लें तो वही आ जाएगा. सो इट हैज़ नो स्टार्ट एंड एंड, and it is a continuous movement of water from atmosphere to the earth and back to the atmosphere in the form of precipitation and infiltration, overland flow, evaporation, etc. So this is called as a hydrological cycle. You can see the diagram also showing various components of hydrological cycle or water cycle. We start from precipitation. What is precipitation? Actually, all types of moisture reaching the earth's surface. सिर्फ रेनफॉल ही प्रेसिपिटेशन नहीं है, स्नोफॉल, हेलिंग, ड्यू ड्रॉप्स. So there are other types of the precipitation as well. You will learn in the chapter of precipitation in theory and also in the lab in design number 3 about the forms of precipitation. So there are various forms, about 9 or 10 forms in which moisture comes from the atmosphere to the earth's surface. Anyhow, so precipitation falls on the earth's surface. Part of it falls on the, you know that on the earth's surface we have different types of the surfaces, like we have the grasslands, we have the water bodies, we have the rivers, seas, oceans, we have the paved areas, buildings, roads, etc. So anyhow, precipitation falls on different types of the surfaces on the earth, and part of that precipitation is infiltrated, seepage हो जाती है उसकी, and part of it goes to the water table, and that infiltrated water, especially the water in water table moves to some water body like river or stream, and part of the precipitated water flows over the land surface and again joins the water body. Then the smaller water bodies join the larger water bodies, and then further जैसे पाकिस्तान में है कि जो रिवर रावी, चिनाब, जेहलम, दे ज्वाइन इंडस रिवर, सतलुज, दे ज्वाइन इंडस रिवर, एंड एट द एंड इंडस रिवर ज्वाइन द अरेबियन सी. सो इस तरह बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि पहले छोटी वाटर बॉडीज़ या फिर उससे बड़ी वाटर बॉडीज़ में ज्वाइन हो जाता है वाटर. So then evaporation takes place not only from the oceans but also from the rivers, from the land surfaces, from the grasslands, from the vegetation areas. So from all the surfaces the evaporation takes place. Water goes back to the atmosphere, it is converted into the clouds, cloud droplets and ice crystals, and then again comes back to the earth surface in the form of precipitation. तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है. And this is called as a hydrological cycle. And the scientific study, studying the scientific processes involved in all this, and the effect of these processes on these phenomena, and the effect of the climate on these processes. So all this is known as, comes under the umbrella of hydrology. Further, some definitions are available in
different books of hydrology, like one by M. Awan, which is a very good book on hydrology. You can get it from different bookstores relating especially to the engineering books. So hydrology is the science of waters of the earth, the scientific study of waters of the earth, their circulation, like water cycle, distribution over the globe, distribution in the form of water percentage in different forms, like how much water is available in the form of water bodies, how much is available in the form of soil moisture, how much is in the form of other types of the things, underground water, groundwater, etc. Their physical and chemical properties, their interaction with the physical and biological environment. This is one definition of hydrology. It's not only the properties, but also its interaction with the environment, that is also part of the hydrology. Hydrology is concerned with circulation of water and its constituents through the hydrological cycle. It deals with the precipitation, evaporation, infiltration, groundwater flow. So further details are mentioned in this. इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? Precipitation, evaporation, infiltration, groundwater flow, runoff, stream flow, and each of these processes mentioned, they have separate books written by the authors. So you can say broad are these processes, and so much information is there in each process to discuss and to study. Stream flow and the transport of substances dissolved or suspended in flowing water. Remember this, when water flows in the channels or over the catchment areas, so it also brings some sediment with that. That sediment can be, it also brings some dissolved material sometime, or sometime the suspended material with that. So that is also part of the hydrology, study of water quality and study of sediment transport, that can also be dealt in this to some extent. Further, another definition by Wiesman Warren book is available in that book, is given. Hydrology is an earth science. It encompasses the occurrence, distribution, movement, and properties of waters of the earth. Knowledge of hydrology is fundamental to decision-making process, where water is component of the system of concern. Especially for civil engineers or hydrological engineers, when we have to construct a dam, when we have to construct a water body, a water-related structure, dam, reservoir, spillway, weir, barrage, canal, or any other such structure, so the knowledge of hydrology is very important for that, to decide few parameters before the actual design and the construction work. Water environment, and even lately afterwards, after completion, during the operation of the project, hydrology of the area is very important. Water environmental issues are inevitably are very importantly linked, and because means that water environmental issues, they cannot be separated. Water has a very you can say important link with the environment, and it is important to clearly understand how water is affected by and how water affects the ecosystem manipulations. Then the engineering hydrology. Using those aspects of hydrology dealing with the engineering projects, that is called engineering hydrology. Because hydrology is also studied by the meteorologists, by the other fields. They also study this in their own way. But hydrology, which is used by the engineers for the engineering projects, is called the engineering hydrology. Engineering hydrology includes those segments of field pertinent or relating to planning, design, and operation of engineering projects for the control and use of water. I already mentioned design of dams, barrages, spillways, weirs, canals,
and many other can say such projects where water is a part and parcel of it. So there, using the knowledge of hydrology for the planning, design, operation of such projects is known as the engineering hydrology. So this definition is provided by Linsley. It's very useful book on engineering hydrology. That is hydrology for engineers by Linsley. So you can also get it from the different books, book shops, and it will be very useful for you for this course, especially the theory course. Significance of hydrology. So why we need to have this knowledge of hydrology? What is significance or importance in our lives, and also in the engineering circles, especially in civil engineering. So because the hydrology deals with the study of water, a comprehensive, detailed study of water, as already mentioned, its circulation, distribution on the earth, its properties, its interaction with the environment. So everything relating to water comes under the domain of hydrology, study of waters of the earth. So, and we know that water is a basic need for sustenance of human life, sustenance of overall life on the planet. So you can well imagine the importance of the subject, क्योंकि वाटर जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की, और उसकी स्टडी ज़ाहिर है कितनी इंपॉर्टेंट होगी वो इससे अंदाज़ा हो सकता है. Like water is key component used for drinking, it's for used for agriculture, for industry, for household use, etc. And for water source management projects as well, for hydropower generation. So there are many avenues where water is used to get the benefits. To cope with the extreme hydrological events like floods and droughts. Floods, they are a result of excessive water coming to the rivers. Our channels are the streams, and flood studies are part of the hydrology. And droughts, they occur because of the shortage of water in an area, because of the scarcity of water. Food generation becomes scarce, and that leads to droughts, इसको कहत साली बोलते हैं या खुश्क साली इसको कह लें. तो ऐसी जगह पे होता है जहाँ पानी बहुत ही कम है या बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो वहाँ चूँकि एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, फूड प्रोडक्शन नहीं हो सकती, तो इस सिचुएशन में चले जाते हैं. तो वहाँ पे भी चूँकि वाटर ही इन्वॉल्व है, और इसकी स्टडी to study this, where it can happen, how we can minimize it, how we can deal with that, so that will also come under the domain of hydrology. Then the third aspect, which is more concerned towards the engineers, the use of hydrology, is to determine the input data for design of hydraulic structure. This is one of the very important uses or application of hydrology. That is, if you want to design any hydraulic structure, like again I'm repeating many times, dams, barrages, spillways, canals, etc. Especially these barrages and the dams, spillways, we need to find the design flood for that, and also for the sediment studies, especially in reservoirs, our channel aggradation and degradation. चैनल में जो है वो बाज़ का बेड लेवल उसका ऊपर आ जाता है, वहाँ सेडिमेंट बैठ जाता है, बाज़ का डिस्कवरिंग हो जाती है. इसी तरह और भी इसके एस्पेक्ट्स हैं इसके यूज़ के. तो दीज वुड बी डन अंडर द डोमेन ऑफ हाइड्रोलॉजी. यस, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? किसी का क्वेश्चन ज़हन में आया हो तो पूछ लें ताकि हम आगे मूव कर सकें. हाउ मेनी फॉरेनर्स आर देयर इन द क्लास? जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनमें कोई हैं? क्यों भाई, CR, do you know how many foreigners are there in your section? So 2-3 foreigners are there, but they understand Urdu. Okay, that's good.
चलें तो अब किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें इस वाले से। हाइड्रोलॉजी क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी क्या है, क्यों भी, कि सबको समझ आ गई है? तो आपने बाद में पढ़ना भी है, ठीक है। यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड अप टिल नाउ? क्यों भी कोई बता No, sir. सकता है? जी जी, व्हाट इज हाइड्रोलॉजी? वन पर्सन फ्रॉम बॉयज एंड वन फ्रॉम गर्ल्स, प्लीज एक्सप्लेन दिस टर्म। हाइड्रोलॉजी क्या है? क्यों भी अभी भी पढ़ा और आपने कहा भी है ये। Sir, जी जी so basically in hydrology we study about water and it's whether underground water or on the surface, and we then study different and then we study how human life is creating an impact on the quality of water and how it's like different pollutants are disturbing its quality. And similarly we also discuss about the management and availability of water. So these are the main domains of this subject. yes, anyone from boys? CR, if you can explain this term, or you can further take it to more details. Yes, no idea. सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। What is or what are domains of hydrology? तो ये करना, क्या क्या चीज़ें हाइड्रोलॉजी में कवर होती हैं, उनमें से कुछ बताएं। सर हाइड्रोलॉजी में वाटर से रिलेटेड हर चीज़ आ जाएगी ना। जिस तरह अब हम कोई डैम वगैरह बनाना चाहते हैं तो हमें इनफ्लो चाहिए होगा कि इस एरिया में कितना पानी आता है, उसके लिए हमें प्रेसिपिटेशन या ग्लेशियर से जितना पानी आता है उसकी फिर सोलर रेडिएशंस वगैरह चाहिए होंगे कि यहाँ इस वजह से इतना पानी आएगा और इतना हम डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी एक डोमेन आ जाएगी। Okay. So one question is how hydrology can deal with the droughts. How can cope with the droughts. ये लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे कि हाइड्रोलॉजी जो है वो जो ड्राउट्स है उसको डील करेगी या उससे रिलेटेड जो है हम कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्यों भी? सर ये पानी का ही मसला है, तो मे बी हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकें कि हम देखें कि अंडरग्राउंड वाटर हमारे पास, अंडरग्राउंड वाटर टेबल किस तरह अवेलेबल है, या फिर अगर कोई इलाके के आसपास कोई रिवर वगैरह है तो उधर से पानी हम किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं उस इलाके में जहाँ पे ड्राउट है। Actually, a major part of hydrology gives you information about the water availability through different sources. ठीक है, whether it's from rainfall, from groundwater, etc. So based on hydrological knowledge you will know कि इस एरिया में इतनी रेनफॉल्स होती हैं हिस्टोरिकली, वो डाटा आप ले लेंगे, इतनी इस जगहों पे जो है वो ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। फिर आप देखेंगे वहाँ की वाटर डिमांड्स कितनी हैं थ्रू एग्रीकल्चर या ड्रिंकिंग वगैरह जो भी है, ठीक है। देन यू विल सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो तब उसे पता चलेगा कि इन एरियाज़ में वाटर स्कार्सिटी हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। अब अगर हो सकती है तो जाहिर है आप कोई वहाँ रेजरवायर प्लान करेंगे, कोई वाटर बॉडी प्लान करेंगे ताकि वो जो डिफरेंस है उसको फुलफिल किया जा सके। तो ये एक एस्पेक्ट है जिससे हम इसको डील कर सकते हैं। क्यों भी समझ आई इसकी? यस सर। चलें, फ्लड्स जो हैं, हाउ
we can deal with the floods using hydrology? सर हम देख सकते हैं कि अभी इनफ्लो पीछे से कितना आ रहा है और उसके मुताबिक जो अभी रिवर है उससे पानी ज़्यादा हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम पानी को डिस्चार्ज कर देते हैं किसी भी डैम से, या ताकि जो पीछे से इनफ्लो आ रहा है उसको हम काउंटर कर सकें. So again, hydrology will give you the flow availability in rivers through the stream gauging, flow measurement in the streams. That is part of the hydrology. ये भी चैप्टर आप पढ़ेंगे इसमें. इसी तरह जो रेनफॉल का डाटा है वो आ जाएगा, स्नो मेल्टिंग का, स्नोफॉल स्नो मेल्टिंग की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो इससे हम based on the historical data and based on the past response of the rivers, we can have some idea that whether in that area there may be flood or not. तो अगर वहाँ पे एक्सेसिव वाटर आ सकता है जो हमें हाइड्रोलॉजिकल नॉलेज बताएगा या हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बताएंगी, तो उस बेस पे हम वार्निंग्स को कर सकते हैं. इसी तरह जैसे आपने सही बताया कि we can accordingly operate the reservoir and so that the damages of the floods can be minimized. So in this way, obviously it's not a one line answer to it, to the questions, but I want to see your involvement in discussion and just want to see how much you can describe in this regard. So it's good that some of you are involved in this discussion and they are they have made you can say right comments regarding the questions asked to you. Okay, so let's move further. Metrology, it is a, because in this design some of the meteorological terms or climate terms we are involved that you in the end have to find, like humidity, saturation deficit, vapor pressure, etc. So that's why it's important to discuss this as well. And it's also one chapter of your theory course, meteorology, that you will learn with Dr. Nursa. Meteorology, it is the science of atmosphere, which is a gas, and atmosphere is actually the gaseous envelope surrounding the earth. तो जहाँ जैसे ही अर्थ सरफेस हमारी है, यहीं से एटमॉस्फेयर शुरू हो जाता है और इसकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं. सो इट्स बेसिकली द मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड द वाटर वेपर दैट one of its layers contains maximum of the water vapor that we will discuss later. So it is the science of, it is the study of, a scientific study of atmosphere, that is called meteorology. Meteorological parameters are study of climate, you can also say, and atmosphere is a gaseous envelope which surrounds the earth's surface. Climate factors which influence the meteorology of an area, a climate of the area, you can say. So some of the factors, important factors, are listed over here, like amount and distribution of precipitation. Amount mean how much precipitation, and distribution mean how it is distributed over the area. किस जगह कितनी बारिश हुई है. तो ये जो है उस जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करेगी, उस जगह के क्लाइमेट को डिफाइन करेगी कि ये रेनी एरियाज हैं या मॉडरेट रेनी एरियाज हैं या जो हैं वो extreme rainy areas and dry areas. Then occurrence of snow and ice. So especially in our country, in the hilly areas, we have this snow and snow falling and snow melting as well later in the summers, which contribute towards the flows in the river. Especially like in Indus River, the data has shown that about 80% of the flows during the summers are from snow melt. A very huge contribution of the snow melting in Indus flows. Similarly, in Jhelum River, again we have sufficient flows, like around, I think, I don't remember exactly the figure, around 60-70% you can say during summers, that comes from the snow melting of the snow fall areas and partly from the glaciers as well. इसी तरह और भी जो है जहाँ पे स्नो फेड रिवर्स हैं वहाँ पे इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, लाइक जो कुनहार रिवर है, दैट इज आल्सो
mainly significant part comes from the snow melting during the summers. Then the wind velocity. So some of the areas are very windy areas. Some areas doesn't have much of the winds flowing. So again, it's a very important factor, climate factor, and it makes the climate hotter or colder in the area, and also those areas where the wind speeds are quite high, so it can lead to windstorms in the area. So in this way, we can categorize different regions of the world, of our country, based on this factor as well. तो कहाँ wind कितने speed में चलती है और वहाँ क्या क्या इसके जो है वो जो facts हो सकते हैं. Temperature is all very famous and very commonly known climate parameter. So it defines the hotter and colder climates, and obviously temperature also have the influence on other parameters as well, like snow melting, maybe it can also be related with the precipitation in the area, humidity, etc. Then the humidity, again, important parameter along with the temperature. So those areas having high humidity, so there obviously during the high humidity period, obviously life is difficult. इसको हबस बोलते हैं, और जहाँ कम होती है वहाँ ज़ाहिर accordingly different scenario होता है. तो ह्यूमिडिटी मीन्स द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. तो जितनी ज़्यादा मॉइस्चर होगा एयर के अंदर उतनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी. So these are some of the factors, their studies, their measurements, their scientific knowledge, their variation and the effect on the atmosphere and on the climate. So it's all under the domain of meteorology. Importance of knowledge of meteorology. अब ये knowledge कहाँ कहाँ mostly use होता है वो यहाँ mention किया हुआ है. So if somebody wants to know the process of cloud formation, when water in the form of vapors goes to the atmosphere with the lifting of air in the area, so how it is then converted to precipitation particles, yeah, cloud particles. So that is covered under the meteorology. You will learn in the precipitation chapter briefly about this cloud formation. Then occurrence of precipitation. तो किन जगहों में बारिश होगी. बाज़ तो ऐसा होता है कि क्लाउड होते हैं लेकिन बारिश नहीं होती, और बाज़ दफ़ा जो है क्लाउड होने के साथ बारिश भी होती है. ठीक है, तो ये इसमें भी है कि किस तरह के क्लाउड्स बारिश करेंगे. तो इसमें जो सिंपल एक चीज़ है कि those clouds having sufficient cloud droplets available, or if the sufficient clouds they converge over an area, so then they cause precipitation. तो हर तरह के क्लाउड प्रेसिपिटेशन नहीं करते. जो हैवीली मॉइस्चर या जो वाटर ड्रॉपलेट कंटेनिंग क्लाउड्स हैं, या जिसे डार्क क्लाउड्स भी बोलते हैं, या बहुत ज़्यादा उस जगह पे क्लाउड अगर कन्वर्ज हो जाए तो तब वहाँ पे बारिश होती है. इसको हम बोलते हैं सफिशिएंट एक्यूमुलेशन ऑफ क्लाउड्स ओवर एन एरिया. थंडरस्टॉर्म फॉर्मेशन, दैट इज़ कि कब फॉर्म होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं उसमें, और किस टाइम पे आते हैं वो, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी. स्पेशली इन द समर्स we have such phenomena, this thunderstorm, they come and they cause precipitation also. Movement of rainstorms, you must have observed many times that at some place rainfall takes place, and later on after some time another place gets the rainfall. So that it means that the rainstorms, they move in certain directions. So what is the direction in which they move? So based on that, weather forecasting are
forecasting relating to rain can also be made. Weather forecast. So weather includes the weather forecasting include the forecasting for temperature, for humidity, for rains, etc. तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं वेदर फोरकास्टिंग में. तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो है मेट्रोलॉजी का नॉलेज बहुत ज़रूरी है. वी हैव द मेट डिपार्टमेंट्स इन आवर कंट्री. PMD आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट. एंड इसके जो रीजनल ऑफिसेज हैं, जैसे लाहौर में है जेल रोड पे RMC रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, आपने देखा होगा कि बड़ा सा वहाँ रेडार लगा हुआ है. तो देयर मोस्टली द क्वालिफाइड पर्सन आर द meteorologists, so they have the degrees in the meteorology, knowledge of meteorology, so they do this all forecasting based on their knowledge and certain other obviously tools. They can forecast for certain time. एक मंथ की फोरकास्ट बात का होती है, इससे ज़्यादा की बात का फोरकास्ट करते हैं. ऑल्दो उसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन with the latest technology coming in, so these forecasting they are becoming more and more accurate nowadays. As a meteorological phenomena are the forerunners of floods. तो जितने भी हैं ये रेनफॉल्स हैं, टेम्परेचर वेरिएशंस हैं, इसी तरह जो रेन स्टॉर्म्स हैं, विंड स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, ये सारे आगे जो है वो मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना हैं. और इनमें से ज़्यादातर जो है वो फ्लड्स की तरफ जाते हैं. जैसे बहुत ज़्यादा रेनफॉल्स होगी, बहुत ज़्यादा स्नो मेल्ट होगी, तो वह फ्लड आ जाएंगे. तो एज द मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना दे आर द फोररनर्स ऑफ फ्लड्स. So based on that flood warning, based on the knowledge of meteorology, based on the knowledge of meteorological parameters and their can say based on their forecast, one can forecast the floods. One can issue the flood warnings in the areas where floods can occur, and forecast may be issued in advance if one can make use of meteorological conditions that are likely to produce floods. So with ये mostly with experience one can learn कि जैसे 2010 का फ्लड आया था, उसमें किस तरह की मेट्रोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो गई थी. तो उसकी बेस पे अगर वो दोबारा ऐसी कंडीशंस होती हैं तो वन कैन प्रेडिक्ट कि यहाँ उस तरह का फ्लड आ सकता है. So that this knowledge also helps you to have the flood forecast in an area. Flood warning can be issued in advance so that the damages of floods can be minimized in a particular area. So this is the importance of knowledge of meteorology. Next is something relating to atmosphere that we have to discuss. Already mentioned that atmosphere is the gaseous envelope which surrounds the Earth's surface. So it consists of many gases like N2O2, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and many other gases, and water vapors as well. There's a mixture of these gases and water vapors available in the atmosphere. यानी कि ज़मीन के ऊपर की जो फिज़ा है वो सारी क्या है, एटमॉस्फेयर है. ठीक है, उसकी भी लेयर्स हैं आगे, वो आप अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में. द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमोस. एटमोस मीन वेपर्स ऑफ ब्रेथ and sphere means sphere or ball. So the shape of this gaseous envelope is just like spherical, semi-spherical आप कह रहे हैं. So this atmosphere means sphere or sphere-like layer containing the vapors. Various components of atmosphere are troposphere. These are actually the layers of the atmosphere. Troposphere, it is also called as hydrosphere because it contains maximum of the atmospheric water. That stratosphere, mesosphere, and thermosphere they are shown in the next slide. I will explain it. On average basis, they extend, so their average thicknesses are given. Like for troposphere, the average thickness is around 12 kilometers starting from the Earth's surface. 50 kilometers for the stratosphere, and 80 kilometer is the mesosphere extension, and thermosphere extended up to 320 kilometers from the start of mesosphere. So these are the different layers shown from the Earth's surface up to 12 kilometers approximately. It is a troposphere.
So it means that we have this troposphere near the Earth's surface or starting from the Earth's surface. तो जिस फिजा में हम रह रहे हैं वो बेसिकली ट्रोपोस्फेयर है, इसको हाइड्रोस्फेयर भी बोलते हैं. And from this up to 50 kilometer it is a stratosphere, and then up to 80 kilometer from this it is a mesosphere, and then the largest thickness wise layer is the thermosphere. This figure shows how the temperature varies in these layers of the atmosphere. So remember this, as you go up, move up, or you go to higher altitude, higher elevation, so up to troposphere the temperature decreases. जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है. बट इन द स्ट्रेटोस्फेयर इट इज डिफरेंट. तो स्ट्रेटोस्फेयर में जब आप जाएंगे और उससे आगे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और इस तरह जो मीसोस्फेयर है उसमें फिर कम होता है टेम्परेचर. अगेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द मीसोस्फेयर, एंड थर्मोस्फेयर एज द नेम इंडिकेट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज in this layer of the atmosphere. So this is how this goes, and this is how the different layers of the atmosphere can be explained. Troposphere or hydrosphere is more important for the hydrologists, for the engineers, और इसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होती. Important इसलिए है कि 99% of the atmospheric water is contained by troposphere. It means that all the processes including the cloud formation, precipitation that occurs in this layer of the atmosphere. Troposphere or hydrosphere, it is a layer of atmosphere which is adjacent to the surface of the earth. It contains 99% of the total atmospheric water. Its average thickness is about 12 kilometers. And for civil engineers, as I mentioned, with the reason that it contains maximum atmospheric water and all the processes for precipitation like cloud formation, etc. So they occur in this layer of atmosphere. That's why for civil engineering is the most important layer. All processes like cloud formation, thunderstorms, precipitation, they take place in this layer. So यही reason है इसकी कि ये important है civil engineers के लिए, hydrologists के लिए. Atmospheric water, it is the water available in the atmosphere. इसको troposphere भी एक्चुअली ट्रोपोस्फेयर ही है जिसमें ज़्यादा वाटर होता है. इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. वाटर इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, आइस क्रिस्टल्स, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेटिंग पार्टिकल्स. ये चार फॉर्म्स है जिसमें वाटर जो है ट्रोपोस्फेयर में या हाइड्रोस्फेयर में अवेलेबल होता है. सो वाटर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, आइस क्रिस्टल्स, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेटिंग पार्टिकल्स. The quantity of water in the atmosphere is approximately 12,900 cubic kilometer. तो ये आपने फिगर ज़हन में रखनी है कि पूरे एटमॉस्फेयर में जो वाटर की जो क्वांटिटी है जो मुख्तलिफ तरीके से मैयर की गई है, अब उसमें क्या फर्दर डिटेल्स हैं उस पर हम नहीं जाएंगे या वो हमारा स्कोप नहीं है कि इसको कैसे मैयर किया गया. बट एट योर ओन आप सर्च कर सकते हैं कि ये किस तरह मुमकिन हुआ कि इसको मैयर किया गया है. And it is about 0.001% of the total global water. पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में जो वाटर अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, रिवर्स, वाटर बॉडीज और सॉइल मॉइस्चर एटसेट्रा, तो उसका ये सिर्फ 0.001% है जो कि एटमॉस्फेयर में वाटर अवेलेबल है. बट इसकी जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो बारिशें हैं वो इधर से ही होती हैं. And 0.5% of the volume of atmosphere, and it is only 0.5% of the total volume of atmosphere is water, but its significance is obviously it is clear in the form of precipitation especially. Then we have certain things to discuss which are directly involved in this. These are the terms which are directly involved in this design. First is the vaporization. It is a process of transformation of water from liquid state to vapor state. That you already know. The process of vaporization at global scale is shown in figure. So main, you can say on the earth, the main source of
energy for vaporization is solar radiation, yes, sun rays. You can see that this is the earth surface shown. Different surfaces are shown on the earth. We have the water body, we have the other surfaces like we have the agricultural, the maybe forests, we have the barren lands, etc. So evaporation takes solar radiation, as I mentioned, is the main source of the energy to convert water into vapors. So evaporation process takes place from the oceans. It takes place from the surface of the earth, from the surface water as well. Evaporation takes place from the land surface. Evaporation takes place from the crops or the plants. Remember this, evaporation from the plants is and in the surrounding areas of the plants is known as evapotranspiration. It is a combination of two words, evaporation from the land surface and transpiration from the crops, from the trees, etc. So these are different bodies are the surfaces from which on the earth evaporation takes place and water is converted to vapors. Next is the vapor pressure. So you know that when the vaporization or evaporation takes place, water goes from water body, from the land surface, from the soil moisture, from the trees to the atmosphere or to the air surrounding the earth's surface or adjacent to the earth's surface. So once that moisture is accommodated in the air, the pressure exerted by that moisture or that water vapors in the air is known as vapor pressure. Its commonly used units are millimeters of mercury. And this is a typical graph showing the saturation vapor pressure and temperature. Saturation vapor pressure on y-axis and temperature on x-axis. The same graph you have to make in your design. This design, you will be provided with the data, and using this data you will be making this graph. So this graph shows that with the increase in temperature of air in the area, its saturation vapor pressure tends to increase. तो जैसे जैसे उस जगह का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उसका जो saturation vapor pressure है वो बढ़ता जाएगा. The reason is that when you increase the temperature of the air, it loses the moisture, and in other words it becomes drier, or more space is available to accommodate moisture. तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एयर का तो उसमें और मॉइस्चर को लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है. तो जब मॉइस्चर को लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो उसका जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर है वो बढ़ता जाता है. जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा एयर के अंदर उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और उतना ही सैचुरेशन वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. यानी कि एयर जो है वो ज़्यादा वेपर्स पे जाके सैचुरेट होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो दैट्स वाई विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर moisture can be accommodated by air, and accordingly more saturation vapor pressure will be there. Then what is saturation vapor pressure or saturated vapor pressure? E sub s or Es is the symbol for it. It is the vapor pressure when air is fully saturated with the moisture, with the water vapors at a given temperature. तो किसी एक टेम्परेचर पे अगर एयर जो है वो फुल हो जाए, मजीद उसमें मॉइस्चर ना जा सके, मजीद वेपोरेशन ना हो सके, तो दैट पॉइंट इज नाउन एज अ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर. जैसे सॉइल है तो सॉइल में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, तो जो मैक्सिमम उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है तो वो उसकी सैचुरेशन लिमिट है. उससे आगे मजीद आप डालेंगे तो वाटर जो क्या है वो वहाँ से ड्रेन आउट शुरू हो जाएगा. It is a bit, so similar is the case for the air, that air has certain capacity based on the temperature to accommodate moisture vapors. So when this capacity is reached, that point is known as the saturation point, and at that time the vapor pressure exerted by the water vapors, pressure exerted by the water vapor is known as the saturated vapor pressure. It is measure of the moisture holding capacity of air, as I mentioned. एयर कितनी मॉइस्चर को ले सकती है, विच इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एज शोन इन दिस फिगर. तो इसमें यही शो किया कि टेम्परेचर बढ़ने से ये जो कैपेसिटी है ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि एयर जो है वो उसमें और आती जाएगी कैपेसिटी मॉइस्चर लेने की. नेक्स्ट इज द सैचुरेशन डेफिसिट.
The difference of the saturated vapor pressure and actual vapor pressure of the air at a given temperature is called as saturated vapor pressure. किसी भी टेम्परेचर पे उस जगह का जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है और उस जगह का जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन डेफिसिट. The difference between saturated vapor pressure and actual vapor pressure of the air at a given temperature. So this tells you that if its answer is obviously positive, और अगर एयर सैचुरेटेड हो जाएगी उस जगह की तो ये ज़ीरो हो जाएगा. बाहर इसका कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर आएगा. हमेशा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर से. सो जितना वट एवर इज द डिफरेंस, इट एक्चुअली टेल्स यू दैट in other words, you can say it tells you how much further moisture can be added to the, or how much further air can take the moisture at that given temperature. So this is basically the saturation deficit. Delta E is the saturation deficit, ES is the saturated vapor pressure, and E is the vapor pressure of the air at a given temperature. Next is the humidity. Humidity means the presence of moisture in the air. Humidity in atmosphere can be assessed by vapor pressure of air. So as you can see, remember this, humidity is measured by relative humidity. जो भी आप देखते हैं किसी जगह पे ह्यूमिडिटी को बताया तो 60%, 70% वगैरह जो भी है वो बेसिकली relative humidity है जो रिपोर्ट करते हैं. So relative humidity is actually measure of humidity of an area, and it is the ratio of the vapor pressure and saturated vapor pressure of the air at a given temperature. And it is expressed in percentage, E or ES into 100. So you can see that with the increase in temperature, what will happen? E of the air will increase. अब इसमें ज़ाहिर है वो एक डायरेक्ट ट्रेंड नहीं है, बात का ये बढ़ भी सकती है, डिपेंड करता है कितना इनके दोनों में कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़ी है. अगर E ज़्यादा बढ़ रहा है ES से तो ये बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी. Dew point temperature, it is the temperature of the air when the dew drops are formed. तो वो आपको पता है ड्यू ड्रॉप कब फॉर्म होते हैं, कब बनते हैं ड्यू ड्रॉप? आमतौर पे किस टाइम ऑफ द डे पे ड्यू ड्रॉप बनते हैं? Night. So during late night period when the temperature drops significantly, what happens? अब टेम्परेचर के ड्रॉप होने से होता क्या है नेचुरली, अगर आप इस फिगर पे आएँ, फॉर एग्जांपल एक जगह का ये टेम्परेचर था से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो जब लेट नाइट आएगा तो उसी जगह का टेम्परेचर क्या कम होना शुरू हो जाएगा. तो क्या होगा, जिस टेम्परेचर कम होगा एयर का तो एयर में जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है कम होती जाएगी, यानी कि एयर सैचुरेशन की तरफ जाती जाएगी. तो वो टेम्परेचर जिस पे एयर जो है सैचुरेट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विद मॉइस्चर नीडेड एज इट नॉट रिमूव. तो हम मॉइस्चर को, अब इसमें दो तरीके हैं ज़ाहिर है, एक ये है कि आप टेम्परेचर को चेंज ना करें, if you don't change the temperature and you want to make air saturated, so what do you have to do? You will keep on adding the moisture in that, vapors in that. A point will come that when no further vapor can be added to the air, that will be the saturation vapor pressure. The other natural phenomena is that to make an air saturated, we can reduce the temperature of the air. तो एयर टेम्परेचर कम होने से क्या होगा कि जो सैचुरेशन की जो पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा और एयर जल्दी सैचुरेट हो जाएगी. तो ये सेम फिनोमिना नेचुरली होता है कि ड्यूरिंग द लेट नाइट पीरियड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज सिग्निफिकेंटली ड्रॉप, so with the constant pressure also and with neither moisture neither added nor removed, so air become fully saturated and the moisture is converted, or the vapors are converted to dew drops, and this is called as the dew point temperature. उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा या वो टेम्परेचर जो कि एयर को सैचुरेट कर देता है, that is called as the dew point temperature. So this is about the related theory. So anybody up till now have any question, please ask. No, sir. Excuse me, sir. जी जी.
सर प्रीवियस स्लाइड पे जो हमारे पास सेचुरेटेड वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ था वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा था, मतलब ज़ीरो टेम्परेचर पर भी कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू थी सेचुरेटेड वेपर प्रेशर की, इसकी रीज़न थी। हाँ, ज़रूरी नहीं है ज़ीरो से स्टार्ट हो, डिपेंड्स। जाहिर है टेम्परेचर जब कम होगा तो वो ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो टेम्परेचर पे ज़ीरो वेपर प्रेशर, बल्कि ऐसा होगा नहीं एक्चुअली कि वेपर प्रेशर भी, क्योंकि कुछ ना कुछ वेपर्स तो एयर में होंगे चाहे टेम्परेचर ज़ीरो हो, ठीक है। या कुछ ना कुछ का सैचुरेशन वेपर प्रेशर होगा। तो यही द सेम थिंग आई एम एक्सप्लेनिंग, व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स तो व्हाट हैपन्स दैट एयर बिकम्स सैचुरेटेड, क्योंकि उसमें जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। तो एक पॉइंट आता है कि उसकी जो सैचुरेशन लिमिट आ जाती है सिर्फ टेम्परेचर कम करने से, विदाउट एडिंग द वेपर्स टू दैट। तो उसमें कोई लिमिट नहीं है कि ज़ीरो पे जाके वो सैचुरेट नहीं होगी या उस पर सैचुरेशन ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है? यस सर, थैंक यू। Yes, any other question? Okay, so I will end it over here. So the reason already I mentioned that I want all of you to get the prints, hard copy of the file shared, and so that when I will provide you the data, so you should start working on that, remaining in the online class, and at the end it will be checked. So from next time around, we will utilize our maximum time available in the lab, and partly for the instructions, procedures, data, and partly to complete your task, or to some extent or to do the calculation and make the graphs, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से ज़ाहिर है आप अपने जो मैनुअल अपने पास रखेंगे, हार्ड जो उसकी कॉपी ले लेंगे, आप प्रिंट ले लेंगे, लेड पेंसिल वगैरह अपने पास रखेंगे। तो ये जो डाटा है वो हम डिस्कस करेंगे, दिस वन, and using this data, and we'll discuss the procedure. So firstly we'll complete the procedure कि आपने ये करना कैसे है, कैलकुलेशन, ग्राफ कैसे बनाना है, आगे फर्दर उसके रिजल्ट्स कैसे आपने बताने हैं, कमेंट्स कैसे करने हैं, एंड देन जो बाकी टाइम होगा उसमें आप while remaining in the class at your places you will complete this design if possible, or maximum part of this design will be completed, और आखिर पे जो टाइम होगा उसमें उसको ऑनलाइन ही आपको चेक किया जाएगा कि किसने कितना काम किया है, ठीक है, अभी क्लियर है? So this will be the way out throughout this lab, especially during the online classes and also on campus classes. So if anybody having anything to ask relating to this calculations and how the time utilization will be made during the classes, lab classes. So next time I should not hear anybody any excuse that he or she could not get the prints. तो ये सबने लेके बैठना है अपने सामने, ताकि जब आपको डाटा शेयर किया जाए प्रोसीजर, उसके बाद आप वहीं बैठ के काम कर सकें और एंड पे आपका चेक किया जा सके ऑनलाइन, ठीक है। अभी CRS से रिलेटेड या किसी और की कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। आपका जो ज़ाहिर है इंटरनेट कनेक्शन वो एंड तक रहना चाहिए। इसी तरह जो जब भी आपको कैमरा ऑन करने कहा जाएगा ताकि आपको काम को चेक किया जा सके, सो दैट यू शुड आल्सो मेक श्योर it's working, your mics are working. So these things they should on your end it should be ensured. वो बात का ही होता है कि एंड पे जी मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा माइक नहीं चल रहा, फलां नहीं हो रहा, तो ज़ाहिर है वो जो इवैल्यूएशन है वो फिर आपकी नहीं होगी इस वाले से। यस, एनी क्वेश्चन up till now before I wind up this, and further we'll have another meeting next Tuesday from 1 to 4. So this slide will be shared hopefully later in the week. तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, या वही मैंने कहा मैनुअल से ही बनी हुई है, तो ये वही से आप
ले लें इसको. Yes, any question from your सर side? इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा. I think now students they can view the recording from the team and download it. अब उनको चेंजेस किए हैं तो ये रिकॉर्डिंग वहीं सेव हो जाएगी आपकी टीम्स में ही. वहीं से आप स्पेशली जिनका जो है ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो आप डाउनलोड करके बाकी को शेयर कर सकते हैं. जिनका नहीं है, मोस्टली का है, तो वो आप वहीं से ले सकते हैं. ठीक है. चलें ठीक है सर, थैंक यू, हम चेक कर लेंगे. और सेकेंडली रिगार्डिंग द अटेंडेंस, सो I can share the attendance sheet, Excel sheet with you CR, and you can mark the attendance with the date. और आखिर पे ऑनलाइन क्लासेस के एंड पे या बाद में आपसे मैं ये ले लूँगा. ठीक है. ठीक है सर. सर मैं स्क्रीनशॉट लूँ या आप शेयर करेंगे? ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले लें, मैं शेयर भी कर दूंगा ताकि किसी तरह से भी कोई ऐसा कन्फ्यूजन ना रहे. ठीक है. तो इसको आप डेट वाइज मार्क करते रहे, फिर मैं एंड पे या जब चाहिए होगा तो मैं आपसे भी ले लूँगा. Okay, this is it from my side. So we have utilized half of the time available to us in this class. As I mentioned, next time we'll utilize maximum of the time. So you should make sure that you bring your printouts, your manual with you, so that you can do the work while remaining in the class. So that will also help you in a way that later you don't have the burden to complete this job. तो ये बेहतर आपके लिए है कि अभी कर लेंगे तो बाद में उस तरह से और समझ भी आ जाएगी करने की, तो साथ साथ ही हो जाएगा आपका. Excuse me, sir.